सब्सक्राइब करें ट्रैवल टेल्स चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैंने ढूंढी ये जगह, मैंने। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ट्रैवल टेल्स। आई एम श्योर यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो आज मैं आई हूँ इगतपुरी में, विच इज़ अ हिल स्टेशन इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये जगह मुंबई से काफ़ी दूर भी नहीं है। इट टुक मी जस्ट अबाउट 3.5 आवर्स टू गेट हियर। सो इगतपुरी में देखने जैसा तो बहुत कुछ है। मैं जाने वाली हूँ बहुत सारी जगहों पर, बट सबसे पहले मैं आई हूँ रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट एंड स्पा, जहाँ पे मैं नेक्स्ट 3 डेज तक रहने वाली हूँ। सो लेट मी शो यू द प्लेस। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इगतपुरी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Another interesting spot is the adventurous activity at the back. You can see there are various different kinds of adventure happening. There are kids who can participate. There are even grown-ups who can participate. मैं बिल्कुल भी adventurous नहीं हूँ, so I am only kind of looking at this and being happy. But whenever you come here, they charge a minimal fee of 350 something per head, and I think you can enjoy all the adventure rides. Hey guys, so इगतपुरी का हमारा ये वाला स्पॉट है त्रिंगलवाड़ी डैम। Look at this place. It's so beautiful and so scenic, isn't it? डैम ही नहीं बल्कि ये लेक भी, it is an untouched beauty. This is my first ever time to Tringalwadi Dam and Lake, and I should tell you that every time I'm in Igatpuri, I'm surely going to visit this place. What about y'all? Wow, look at this. Wow. Isn't it really beautiful? अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम।